Good morning, students. Today we are going to cover a inventory management, inventory planning topic. What is inventory? Basically, the term inventory include a material, raw material, in process material, finished packaging, spare parts and other stocked in order to meet the unexpected demand or distribution in the future. Basically, inventory is a physical resource that a firm hold in a stock with the intent of selling it or to transforming it into a more valuable state. So whatever we have in our stock, whatever we are have a items or a goods which are in process and whatever we have in a finished form all come under the inventory. Inventory can be used to refer to the stock on hand at a particular time period. The raw material, goods in process of manufacturing, finished product, merchandise purchase if you want to resell it, and it's like a tangible asset which can be seen, measured, and counted. And in connection with the financial statement and accounting records, the reference may be to the amount assigned to the stock of goods owned by an enterprise at a particular time. Clear? Now, the classification of inventory. Basically, we have five types of classification of inventory, that is tools, supplies, raw material, good in process, and finished goods. But we can classify the inventory in direct and indirect form also. A direct inventory, that is your raw material, purchase parts, work in progress inventories, or finished goods that are directly included in your goods. Whatever you are manufacturing, whatever goods in which you are dealing with. Okay, the raw material means raw material are commodities such as steel, fabrics, etc., and purchase parts such as you can such as gear, piston, etc. That goes into the final product. Then the purchase part, purchase item from outside the supplies, component, sub-assemblies, finished parts, etc. Instead of manufacturing in the factory itself, we are purchasing it from the outside. Then we have a work in progress inventory, or you can say the goods which are in progress, in process, are a material that have been partly fabricated but are not as yet completed. Then a finished product are a completed item which is ready for the shipment. Then we have indirect inventories. Indirect inventories which are not included in our goods, but they are the inventories which support us to make our production, to produce the goods in a more efficient way. Like tools, it includes fixtures, dies, patterns, hand tools that used with machines and operations. Then we have supplies. Supplies are the item such as soap, oil, fuel, lubricant used to aid production but do not get into the product. Clear? I hope now you understand the difference between various types of inventories. Now the characteristics of inventories. Inventories serve as a cushion to absorb shock. Why it is serve as a cushion? देखिए, मार्केट में अगर आप लोगों को कभी माना आपके लॉकआउट हो गया, ठीक है, स्ट्राइक्स हो गई, या जैसे आपने यहाँ पर देखा पिथौरागढ़ में कि रोड ब्लॉक्स हो गई हैं, तो इन्वेंट्रीज जो शॉक हमें मिला कि अब हमें पास गुड्स नहीं होंगे सब सेल आउट करने के लिए, या गुड्स नहीं होंगे कंज्यूम करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस शॉक को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है इफ़ वी हैव इन्वेंट्री। तो अगर आपका रोड ब्लॉक होता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके पास एक स्टॉक है, इन्वेंट्री है, दैट कैन बी यूज्ड बाय यू टू
मैन्युफैक्चर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होगी वो कंटिन्यूशन में रहेगी, वो जो है हॉल्ट नहीं होगी, रुकेगी नहीं। आपका कस्टमर अगर आपकी शॉप में आ रहा है तो वो भी सेटिस्फाई होकर जाएगा, बिकॉज दे हैव अ गुड्स, यू हैव अ इन्वेंट्री। तो इस तरह के जो शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करने के लिए एज अ क्वेश्चन ये इन्वेंट्री हमारा काम करती है। Inventory for any organization is necessary evil. Why it is considered as a necessary evil? It is evil because आप इन्वेंट्री जब रख रहे हैं तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट, करेंट एसेट का अमाउंट या कैश जो होता है ब्लॉक हो रहा है इन्वेंट्री में, आप उससे कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अगर इन्वेंट्री है तो आपने उसके लिए जो पेमेंट कर रखी है वो ब्लॉक हो गई, बट इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, क्योंकि अगर इन्वेंट्री नहीं होगी तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना हो पाए क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो इन्वेंट्री जो है नेसेसरी भी है एंड दैट इज इवल ऑल्सो। दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी इवल, बिकॉज इट ब्लॉक द सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट ऑल्सो. Then inventory are the result of many interrelated decisions and policies within an organization. Whatever inventory you are consists, वो आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिसीजन नहीं है, इट इज़ अ डिसीजन ऑफ वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, ये इंटर रिलेटेड है. मैं आपको मार्केटिंग बताता है किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, प्रोडक्शन बताता है कि उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वट एवर यू हैव रिक्वायर्ड. आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट बता रहा है कि वट हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री. क्लियर? तो इट इज़ अ इंटर रिलेटेड डिसीजन. देन इन्वेंट्री प्रोवाइड प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑल्सो. प्रोडक्शन इकोनॉमी मीन्स अगर आप कोई चीज़ बल्क में लेते हैं तो यू गेट अ कैश डिस्काउंट, तो वो आपको इकोनॉमी दे रहा है. ठीक है, अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर आपकी 100 यूनिट एट अ टाइम बनाने की कैपेसिटी है एंड इफ़ यू आर यूजिंग दैट कैपेसिटी फुल, तो आपके लिए क्या है, प्रोडक्शन इकोनॉमी आपको मिल रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल यू आर अचीविंग, पर यूनिट कॉस्ट विल रिड्यूस. सो इन्वेंट्री हेल्प यू इन सच अ वे ऑल्सो. देन इन्वेंट्रीज फंक्शन. What type of function inventories perform? Basically, inventory is an essential part of any organization. As you learn, it is a necessary evil. Every business, manufacturing organization, however it is a big or small, has to maintain some inventories. As inventory is a blocked working capital of an organization, ideally it should be zero, but it is not. ओके, इन्वेंट्री इज नेसेसरी इवल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर रहा है. हमें इसे ज़ीरो करना चाहिए क्योंकि इवल है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स, लाइक it ensure against delay of in delivery, it improve customer services and have a better customer relation, it maintain a smooth and efficient production flow, take care of fluctuation in the demand and lead time, it take care the increasing price tendency of the commodity, it ensure against the scarcity of the material in the market, क्योंकि जब scarcity होगी या prices में fluctuations होगा, you have inventory, तो it will help you. It take advantage of quantity discount. It saves the transportation cost also. It help you to better utilization of your man, machinery, etc. Your resources are better utilized with the help of this. Okay, it prevent you from the unplanned shocks like labor strike, natural disaster, etc. And also for possible increase in the output. Clear? Now, as you learn about the functions of inventory, now the same is the importance of inventory. I think now it is clear to you that why inventory is so important in any organization. It provide and maintain a good customer service. आप देखते होंगे जब आप मार्केट में जाते हैं, जिस शॉप में आपको ज़्यादा वैरायटी मिल रही है, आप उसी शॉप में जाना पसंद करते हैं. तो इट मीन्स you are trying to make a good customer service, good customer relation. It enables smooth flow of goods through the production process. It provides protection against uncertainty of demand and supply. Various production operations can be performed economically and independently.
It can allow temporary variations in operating rate also. If you have a certain inventory, work in progress inventory if you have, तो अगर आपके operations में timing में कुछ थोड़ा बहुत changes भी आता है तो that can also be easily accommodate. It ensure a reasonable utilization of your equipment and labor. It will help you to get a bulk discount. It facilitate transact and handling also. It serves as to isolate the supplier, producer and consumer. It also reduce your material handling cost. Inventories are held to facilitate product display and service to the customer. So now you understand how important the inventory is. Now in next class we will talk about inventory planning. Thank you, students.